My dear students, good wishes. In this lecture, we shall do sentences of different types. Some sentences in which we use some other preposition in place of by. We shall also do some proverbs and some mixed sentences making passive voice or making active voice of the passive. So, in this way we shall be doing all this. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਰਬਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਐਟ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੁਝ ਨਾਲ ਵਿਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਬਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵੀ ਸੀ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਟੀਚਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸਿਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਦਾ ਟੀਚਰ ਇਜ਼ not known to my father. The teacher is not known to my father. ਜਾਨੀ known ਦੇ ਨਾਲ to ਲੱਗਦਾ ਹੈ, married ਦੇ ਨਾਲ to ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ a man is known by the company he keeps। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ known ਦੇ ਨਾਲ by किस तरह लग गया, क्योंकि ये जिहड़ा है ना बाय द कंपनी ही कीप्स, ये जानी उस तरह पैसिव वॉइस का रूप तो है लेकिन ये उहदा ऑब्जैक्ट नहीं गा। ऑब्जैक्ट डिफरेंट लगूगा, जे असीं इहदी एक्टिव करनी होवे ना तो डिफरेंट ऑब्जैक्ट लगूगा। असीं इदां करांगे कि वी नो अ मैन बाय द कंपनी ही कीप्स। भावे होया कि वो जो नोन टू है वो असी वखरा लाते हैगे, वो वक्री किस्म का जोड़ा है सेंटेंस हैगा। फिर असी देखते हैं दिस जग कंटेन्स मिल्क। कंटेन्ड नाल इन लगेगा पैसिव वॉइस दे विच। मिल्क हुंदा तो मिल्क लांदे, वाटर है तो वाटर लग जाएगा। वाटर इज कंटेन्ड इन दिस जग। वाटर इज कंटेन्ड इन दिस जग। आई कैन नॉट please you. You cannot be pleased with me. Pleased with a person ਹੁੰਦਾ हैगा। Pleased at a thing, कोई चीज़ है तो pleased at लगेगा पैसिव दे विच। अगर व्यक्ति है तो pleased with लगेगा। जानी contained दे नाल आपां की देखिया in लग्या, इदां इंटरेस्टेड दे नाल भी in लगेगा पैसिव वॉइस दे विच। नेक्स्ट है This book does not interest us. We are not interested in this book. We are not interested in this book. What surprises you? What are you surprised at? जानी surprised नाल at लगदा। इस तरह amazed उदों वध डिग्री हुंदी हैरानी दी। astonished उदों भी वध अचंभत होना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟ ਲੱਗੇਗਾ ਪੈਸਿਵ ਵੌਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਕਟਿਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ your result satisfies everybody. Everybody is satisfied with your result। ਜਿਹੜੀ satisfied ਨਾਲ covered ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ with ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। The news alarmed everyone. Everyone was alarmed at, alarmed not at. Everyone was alarmed at the news. Your behavior has shocked us. We have been shocked at. We have been shocked at your behavior. Wildflowers grow over the field. The field is overgrown with, grow over ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ overgrown with wildflowers. Her work pleased the teacher.
द टीचर वाज प्लीज्ड, हुण देखो की लगूगा, द टीचर वाज प्लीज्ड एट हर वर्क, क्योंकि विद ए परसन हुंदा, एट ए थिंग हुंदा। हुण कुछ प्रोवर्ब्स आपां देखदे हां, उन्हां दी पैसिव वॉइस किस तरह बनदी है। अगर कोई पैसिव हो तां उसदी एक्टिव बनावांगे। अपना फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट प्रोवर्ब इज अ रोलिंग स्टोन गैदरस नो मॉस, इहदा भाव हुंदा धोबी दा कुत्ता ना घरदा ना घाट दा। हुण इहदी पैसिव देखो किस तरह होगी, नो मॉस इज गैदर्ड बाई ए रोलिंग स्टोन, नो मॉस इज गैदर्ड बाई ए रोलिंग स्टोन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, वेले दा कम कुवेले दियां टक्करां, भाव कि समय सिर वक्त सिर एक तोपा लग जे तो वो 9 तोपे बच जाते हैं। यदि पैसे बनेगी 9 स्टिचेस आर सेव्ड बाय 1 इन टाइम, ध्यान रखना है, जिन्होंने याद कर लेना है। 9 स्टिचेस आर सेव्ड बाय 1 इन टाइम, गॉड हैल्प्स दोज हू हैल्प दैमसैल्व्स। हुण इहदे विच जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वो पूरा का पूरा दोज हू हैल्प दैमसैल्व्स हैगा, इहनूं अगे लेवांगे। Those who help themselves are helped by God. Those who help themselves are helped by God. What cannot be cured must be endured. ये हुण पैसिव वॉइस बी लग्या, थर्ड फॉर्म लगी है। What cannot be cured must be endured. One must endure what one cannot cure. One must endure, then ऑब्जेक्ट असीं कोलों लाया। One must endure what one cannot क्योर। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये भी पैसिव आ, वाज लग्या, थर्ड फॉर्म लगी है। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, ये हुण कहावत का भाव हुंदा वैसे कि हथेली उपर सरों नहीं जाती, भाव कि कोई भी वड्डा काम होवे तां उस नूं समा लगदा है। रोम हुण जिहड़ा हैगा गा एक सभ्यता सी रोम की, अजकल तो यह इटली की राजधानी है, लेकिन एक बहुत वड्डी सभ्यता सी, वो हुण सभ्यता एक दिन च नहीं बन गई। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, हुण इस असी ऑब्जैक्ट लावांगे बाय द पीपल। द पीपल डिड नॉट बिल्ड, फर्स्ट फॉर्म, द पीपल डिड नॉट बिल्ड रोम इन ए डे। नेक्स्ट इज मेक हे वाइल द सन शाइन्स, ਇਹਦੀ पंजाबी हुंदी हैगी आ कि वगदी गंगा विच हथ धो लवो। ना हुण इस गंगा की अंग्रेजी है ना हत्थां की अंग्रेजी है, भाव कि उन्हां दे अनुसार ये हुंदा कि जब सूरज निकलिया होया धुप चमकदी है तो हे जो चारा वगैरह है पशुओं का फटाफट तैयार कर लो। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, असीं इहदा बनावांगे लैट हे बी मेड, लैट हे बी मेड वाइल द सन शाइन्स। Those who live in glass houses should not throw stones at others. बड़ा इंपॉर्टेंट एक कहावत हैगी है कि भी जो आप शीशे के घरां विच रहिंदे हन उन्हां नूं दूजियां ते पत्थर नहीं सुट्टने चाहिए। हुण इहदे ते आपां सबजैक्ट देखदे की आ कि those who live in glass houses should not throw stones at others. Stones should not be thrown at others by those who live in glass houses. Man proposes, God disposes. बंदा जोड़े रब तोड़े, ਜਾਂ ਇਹ भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि बंदा जोड़े पली पली ते राम रुढ़ावे कुप्पा। कई बार इदां भी हो जाता है। तो यदि पैसे बनेगी कि what man proposes is disposed by God, या God disposes what is proposed by man। दो तीन तरह नाले बन सकता है। इनू आप इदा भी इनू कर सकते हैं कि what is proposed by man, सब तो वधिया ढंग इहदा यह है कि what is proposed by man is disposed by God। Next, prosperity makes friends and adversity tries them। खुशहाली मित्र बनाउंदी है अते जो मंदहाली है, विपता है, मुश्किल है, वो उन्हां दी परख करदी है। Friends are made by prosperity and tried in adversity लाउणा आपां, and tried in adversity, by दी बजाय इन ज़्यादा टुकमा है।
trust in God and do the right. Let God be trusted in and the right be done. Let God be trusted in and the right be done. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਰਬਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਪਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਐਟ ਲੱਗਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਮੇਜ਼ਡ ਹੈ, ਅਸਟੋਨਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਐਟ ਹੈ ਤਾਂ ਕਵਰਡ ਵਿਦ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਹੈ, ਨੋਨ ਟੂ ਹੈ, ਮੈਰਿਡ ਟੂ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਕਸਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫॉर ਟੀ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਫॉर ਟੀ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਪ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫॉर ਦਾ ਸ਼ੌਪ to be closed. It was not the time for the shop to be closed. People went to see the playing of the match. ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੈ? People went to see the match being played. People went to see the match being played. The quinine tastes bitter. The quinine is bitter when tasted. The quinine is bitter when tasted. Your hands feel soft. Your hands are soft when felt. ਜਾਣੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇਗੇ। ਅਬ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ ਟੂ ਰਾਈਟ ਵਿਦ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅ ਪੈਨ ਇਜ਼ to be written with. A pen is to be written with. I am to do it. ਹੁਣ ਇਸ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਟੂ ਹੈ ਨਾ। it is to be done. it is to be done by me. ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ go। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ be gone। be ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਬਣਾਤੀ be gone। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ go ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ ਟਵਿਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ go ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ be gone। ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ you are ordered to go, ਫਿਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਕਸਟ let the boy come in। ਇਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਵਿਸਟ ਕਰਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ the boy should be allowed to come in। the boy should be allowed to come in। let us enjoy the party। ਐਕਟਿਵਾ let the party be enjoyed by us। let the party be enjoyed by us। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਪੈਸਿਵ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਓਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ he was forced to resign his job। ਪੈਸਿਵ ਆ he was forced to resign his job, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਫੋਰਸਡ ਹਿਮ। ਵਧੀਆ ਇਹ ਆ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਫੋਰਸਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਈ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇ ਫੋਰਸਡ ਹਿਮ, ਆਈ ਕਰ ਦਈਏ ਪੀਪਲ ਫੋਰਸਡ ਹਿਮ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਫੀਸਰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦ ਆਫੀਸਰ forced him to resign his job। ਜਾਣੀ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਡਿਊਟੀ ਮਸਟ ਬੀ ਡਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੈਸਿਵ ਆ। one should do one's duty। ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ one should do one's ਲਿਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ apostrophe ਐਸ ਲਾਵਾਂਗੇ one should do one's duty। ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ we should do our duty, ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। the thief was caught। ਚੋਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਫੜਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ। the police caught the thief। ਲੇਕਿਨ ਐਂ ਲਿਖ ਦਈਏ the people caught the thief, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। the money was lost। ਓਬਜੈਕਟ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। he lost the money। he lost the money। ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾ ਦੀ ਓਬਜੈਕਟ we lost the money, ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। the letter has just been posted by me ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ I have ਜਾਂ she has
या यू हैव, कोई मर्जी आपां ला देंगे। तो शी ला लिया, चलो मान लो, या आई ला लिया। आई नाल करते हैं पहला, आई हैव जस्ट पोस्टेड द लैटर, या शी हैज़ जस्ट पोस्टेड द लैटर। नेक्स्ट इज द केस इज बीइंग लुकड इनटू, आप ऑब्जेक्ट लाना, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, या दे आर लुकिंग इनटू द केस। भाव यह होंगे कि ऑब्जेक्ट असीं जिहड़ा भी सानूं टुकमा लगे ला सकते हैं। दे आर लुकिंग इनटू द केस। स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हीयर, पैसिव। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग हीयर, वी प्रोहिबिट स्मोकिंग हीयर। ट्रेसपासर शैल बी प्रोसीक्यूटिड, उलंघना करन वालियां नूं सज़ा दित्ती जाएगी। कोई प्रोहिबिटेड एरिया है, उत्थे लाया हुंदा है जा कोई नोटिस कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसीक्यूटिड। इत्थे शैल बी लगे, इसका मतलब बहुत पक्का ऑर्डर है, एक आदेश है कि ट्रेसपासर्स शैल बी प्रोसीक्यूटिड। असीं ऐं ला दीए कि वी विल, असीं भी वी नाल शैल नहीं लाउंदे, उल्ट लावांगे हुण पक्का हुक्म देण वास्ते। वी विल प्रोसीक्यूट द ट्रेसपासर्स। ट्रेसपासर ध्यान रखना TRES है, सिंगल एस आ, डबल एस नहीं पाउणा। वी विल प्रोसीक्यूट द ट्रेसपासर्स, भाव कि असी उलंघना करन वालियां नूं सज़ा देवांगे। अ वीक इज़ मेड ऑफ 7 डेज, ये ऑब्जेक्ट हैगा, लेकिन ऑफ लग्या होया, भुलेखा नहीं खाना, बाय नहीं लग्या होया, तो यदी एक्टिव होएगी 7 डेज मेक अ वीक। 7 डेज मेक अ वीक। इट कैन नॉट बी हैल्पड, पैसिव आ, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिता होया। वी कैन नॉट हैल्प इट, वन कैन नॉट हैल्प इट, यू कैन नॉट हैल्प इट। भाव कि जो इदां दा होवे ते असीं जिहड़ा भी टुकमा सानूं लगे, असीं ऑब्जेक्ट जिहड़ा है ला सकते हैं। उंज भी इहो जिहे सेंटेंसिस सानूं कई वारी आ जांदे ने कि नथिंग कैन बी गॉट विदाउट हार्ड वर्क, कैन बी गॉट पैसिव आ, असीं बना देंगे कि वी कैन गैट नथिंग विदाउट हार्ड वर्क। तो इहो जिहा कोई भी आ जाए असीं वी कैन डू। थैंक्स फॉर watching this video, and to see all other videos on English Made Easy, please subscribe to Sirjana TV, share it, listen very carefully, and also practice. Best wishes, God bless you, stay happy, stay healthy, stay on the ninth cloud, chardhi kala ch raho. Best wishes.